अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी PSY402 की असाइनमेंट। पढ़ेंगे नहीं, सॉरी, करेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगी, लेकिन उससे पहले, सोल्यूशन से पहले मैंने आप लोगों को हम मतलब कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। एंड देन जो भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी, आप उसे बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अब तक आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि प्लेजरिज्म आ जाता है। आप लोग उससे कॉन्सेप्ट लेंगे कि बेसिकली असाइनमेंट कैसे करनी है, देन और आप उसको खुद खुद से करेंगे। असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस असाइनमेंट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। इस असाइनमेंट को करने के बाद कौन सी चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी? अंडरस्टैंड द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट एथिकल प्रिंसिपल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इवेलुएट द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स इन रिसर्च। हमारे पास क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर हमने करना है, तो हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 5 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द APA कोड हैज बीन टच्ड अपॉन इन योर कोर्स। हमने जो अपने कोर्स में APA के 5 जनरल प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। With reference to ethics in experiment, please go through the lecture number 10 in detail to attempt this assignment. Following is an experiment. Mr. Ahmed supervised is conducting an experiment entitled The Effects of Mindfulness Mediation on Stress and Anxiety Level in College Students. Participants of the study include college students aged 18 to 24. Participants will be randomly assigned to either a mindfulness mediation groups or a control group. The mindfulness meditation group will participate in a 6 week mindfulness based stress reduction program consisting of weekly 1 hour group session and daily 20 minutes mediation practice. The control group will receive no intervention during the 6 week period. Both groups will complete a pre test and post test survey measuring their levels of stress and anxiety. After the study, the control group will be offered the opportunity to participate in the mindfulness based stress reduction program. According to the American Psychological Association, there are 5 ethical principles of psychologist and code of the conduct. Your task is to carefully read the experiment scenario given above and discuss how each of the said principles could be applied in the mentioned experiment. अब इनके मार्क्स स्कीम क्या है? 4+4+4, मतलब जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, पांचों प्रिंसिपल्स के 4 मार्क्स होंगे। एंड टोटल जो आपकी असाइनमेंट के मार्क्स होंगे वो होंगे 20। Instructions to follow. Read assignment carefully before attempting assignment. First, briefly define and relate then each law to the given scenario. Explain the law in context of given scenario and discuss how can it be applied in that situation. Do not copy paste, otherwise no marks will be given. Note, only in this case of assignment 24 hours extra grace period after the due date is usually available to overcome uploading difficulties which may be faced by the students on the last date. This extra time should only be used to meet the emergencies and etc. Important instructions, जिसमें डेडलाइन है आपकी कि आपने डेडलाइन से पहले अपनी एप्लीकेशन जो भी है उसको अपलोड करना है। फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस क्या है कि आपने न्यू टाइम न्यू रेमन Arial and font size 12. It is advised to compose your document in MS Word. Use black and blue font colors. Solution guidelines. Every student will work individually and has to write in the form of an analytical assignment. Give the answer according to question. For acquiring the relevant knowledge, don't rely on only on handouts, but watch the video lectures and use other reference books also. Rules for making. Please note that your assignment will not be graded uh, are graded as 0 if it has been submitted after due date, the file you uploaded doesn't open or is corrupt, it is any format other than documents MS Word, it is cheated or copied from the student, internet, books, journals, etc. तो यहाँ पर हमने गाइडलाइंस भी देख ली और अपना क्वेश्चन भी रीड कर लिया। अब इसका जो मैंने सोल्यूशन लिखा है वो मैं आप लोगों को एक दफ़ा रीड करके बता देती हूँ, और उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आप लोग किस तरह से इस असाइनमेंट को करेंगे। In the given experiment scenario, let's discuss how each of the 5 ethical principles of psychologist and code of conduct outlined by the American Psychological Association could be applied. Beneficence and maleficence. This principle emphasizes the importance of promoting the well-being of individual and minimizing harm. In the experiment, this principle can be applied by ensuring that participants' well-being is protected. The researcher can take steps to minimize any potential harm or distress that may arise from participating in the study. For example, they can provide informed consent, ensure confidentiality, and provide resources for support if needed.
Fidelity and responsibility. This principle emphasizes the need for psychologists to establish trust and be responsible in their professional relationships. In this experiment, the researcher should clearly communicate the purpose, procedure, and potential risk and benefits of the study to participants. They should also ensure that participants have the right to withdraw from the study at any point without any negative consequences. Integrity. The principle of integrity involves being honest, accurate, and truthful in professional activities. In this experiment, the researcher should accurately report the methodology, results, and conclusions of the study. They should avoid any harm, any form of deception, and maintain the scientific integrity of the research purpose. Justice. The principle of justice emphasizes fairness and equal treatment for all individuals. In this experiment, the researcher should ensure that the selection and assignment of participants to the mindfulness, meditation group, or control groups are done randomly and without bias. This helps in avoiding any systematic differences or advantage between the two groups. Additionally, the researcher should ensure that participants from the control group have an opportunity to access the mindfulness based reactions. 1 सेकेंड मुझे देखना है कि स्क्रीन लो। माशाल्लाह से स्क्रीन तो शो ही नहीं हो रही हमारी। आई होप आप लोगों को अब शो हो गई होगी। एंड सॉरी फॉर दैट, जो मैं पहले इतना बोल गई हूँ, लेकिन अब प्लीज मैं दोबारा लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर सकती, असाइनमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकती। मैंने इन्हें ही रिपीट किया है जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। आप लोग इन्हें पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा थोड़ा रिपीट करती हूँ। फर्स्ट है बेनिफिशेंट्स एंड नो मेलिफिशेंट्स। सेकंड इज फिडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटेग्रिटी, जस्टिस हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट एंड डिग्निटी। This principle highlights the importance of respecting the autonomy, privacy, and dignity of individuals. In this experiment, the researcher should obtain informed consent from participants, clearly explaining the purpose, procedure, potential risk, and benefits of the confidential handling of data. By adhering to these ethical principles, the researcher can ensure the well-being of participants, maintain professional responsibility, conduct the study with integrity, promote fairness and the respect the rights and dignity of the individuals involved. तो ये मैंने जो अपनी तरफ से असाइनमेंट का एक सोल्यूशन आप लोगों को शो किया है। इस ये जो मैंने आपको शो हो रहा है, ये बेसिकली इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि आप लोगों ने असाइनमेंट में क्या लिखना है और किस तरह लिखना है। समझ आ गई कौन से 5 एथिकल प्रिंसिपल्स। आगे जो उनकी डिटेल है ये आप लोग खुद से अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। अगर इसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो प्लेजरिज्म आ सकता है, अगर आप लोग सब ही इसे कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के असाइनमेंट में पूरे मार्क्स आए। अल्लाह हाफिज।